afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सोनम। आपकी तो मैंने आवाज ही शायद फर्स्ट टाइम सुनी होगी आई गेस। सर्टिफिकेट का Yes, पूछ ma'am. रहे थे क्या आप? No, ma'am. अच्छा ठीक है, आज एंड लास्ट क्लास है, आपको पता है ये? Yes, ma'am. I know. ठीक है, आपको सब समझ आया वट एवर वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास फॉर होल मंथ? Yes, हैव यू ma'am. गॉन थ्रू द पीपीटीज? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? आई कैन ओनली सी सलमा। व्हाट अबाउट अदर्स? प्रतीक, प्रियांशी, प्रीति, यपन, मनीषा? यस यपन। हैव यू गॉन थ्रू द पीपीटीज? Awesome. Sorry, what are you saying? You're not audible to me. Okay. So, I'm seeing presentation. okay. Okay. Preeti, are you there? Priyanshi, Yes, Manisha. ma'am. Okay, Yes, Preeti. ma'am. So, do you have any doubts? Yes, ma'am. No, ma'am. Have you gone through all the syllabus, all the PPTs? Uh, I've shared in the group. uh, yes, ma'am. I already see and also read this. Okay. Priyanshi, Yes, ma'am. have you gone through the PPTs? Yes, ma'am. So, do you have any doubts? All No, clear? ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Wow. Any feedback you want to give? How many classes you have attended? I think so. चलो ठीक है, आप ही बता दो। वैसे मेरे को याद तो है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। यू कैन टेल मी हाउ मेनी क्लासेस यू हैव अटेंडेड। ओके। व्हाट अबाउट मनीषा? Yes, ma'am. यू वर नॉट रेगुलर इन द क्लास? मैम एक्चुअली मैंने 2 क्लासेस मिस करी है बिकॉज मैं बाहर मतलब आउट ऑफ टाउन थी, दैट्स ओके। व्हाई। हैव यू गॉन थ्रू द पीपीटी और आपने रिकॉर्डिंग देखी? यस मैम। ओके। प्रीतम, यू आर फ्रॉम दिस बैच ओनली प्रीतम, बिकॉज आई हैव सीन यू वेरी न्यू नेम टू मी। लास्ट सेशन में अटेंड कर रहे हो, बताओ। ओके। तो एज यू ऑलरेडी नो, नो डाउट्स एट ऑल। ठीक है, किसी के कोई भी डाउट्स नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज, मैंने आपको बताया था कल कि मेरे पास सिलेबस बना हुआ है। वी कैन गो टू वन वन टॉपिक अगेन एंड अगेन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फॉर एन ओवरव्यू कंक्लूजन। उसके बाद वी विल से थैंक यू फॉर हैविंग अस ट्रेनिंग विद अस, है ना। और जिनको भी आगे इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी है, दे वांट मोर, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर एडमिन टीम और दे कैन कॉन्टैक्ट अस एज वेल। ठीक है। जिनको भी आगे कंपटीशन करना है, दे वांट अ फुल इंटर्नशिप, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे कि हमने सिर्फ आज एक ही कॉन्सेप्ट लाइक इस मंथ में कवर किया, विच इज ओनली द रिक्रूटमेंट पार्ट। बट देयर आर मोर देन 30 मॉड्यूल्स, मोर देन 30 सिलेबस आर देयर एचआर के अंदर पढ़ने के लिए। दिस इज ओनली द क्रिस्प ऑफ इट। ठीक है। अभी आपने सिर्फ ऊपर की लेयर देखी है, बट वेन यू एनरोल्ड विद अस इन दिस इंटर्नशिप, वी विल ऑल्सो गो वन बाय वन लेयर ऑफ इट, प्लस उसके प्रैक्टिकल सेशंस भी हों। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कल हमारी जो क्लास हुई थी, दैट वाज ऑन कंपेंसेशन, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स, केपीआईज, क्या क्या हमारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। सो दिस इज हाउ आर ऑल्सो वी हैव अ सॉफ्टवेयर ऑल्सो, जहाँ पे आप फॉर्मूलाज भी पुट करोगे, देन यू गेट टू नो। हमारा एक प्रॉपर पोर्टल बन रहा है एचआर स्कोर कार्ड के ऊपर। ठीक है। इन विच आपको सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगा, वेर यू गेट टू लाइव प्रैक्टिस। आप वो प्रैक्टिस करोगे इस पोर्टल पे कि कैसे कंपेंसेशन, कैसे फॉर्मूलाज आप लोग यूज करोगे। ठीक है। उसके अलावा आपको वहाँ पे लाइव वीडियोस भी मिलेंगी, एमसीक्यू भी मिलेंगे। अभी आप लोग हैव यू एवर कंप्लीटेड योर असाइनमेंट्स? उस पे असाइनमेंट्स गिवन, आप लोग कर रहे हो क्या कुछ पोर्टल्स पे? देखा आप लोगों ने? सलमा, यू आर ऑन म्यूट। So we are just uploading the assignments you have given, right? You are uploading the assignment. Apart from that,
for the further who will enroll with us, we are also providing the MCQ, okay, and the analysis part as well. कि हम आपको एक score card देंगे कि how you were before and how you are after these sessions. ठीक है, you will definitely feel the difference between that. Okay, so I'll share my screen. Let's start with the topics. We have covered this whole month basically. ठीक है, उसका थोड़ा बहुत overview कर लेंगे. Today class will not be lengthy because as you already know, this is the end of the session. This is basically a revision class or a doubt session. Apart from that, apart from Salma, Preeti, I have asked Pratik और कौन है रशिका, आपको कोई डाउट है or we can move forward. Do you guys have any doubts? No, ma'am. No, ma'am. No, you don't have. Okay, okay. I'll share my screen and we can continue with the. So I just have one thing to ask that the internship, like further internship, the enrollment, a little clarity would be helpful. Like I missed the first half of Anita ma'am's class for the 15 minutes. So when I joined back, everything was done. Okay, actually, she was just telling me that also कि if you want to getting enrolled, basically आप लोगों को हमको कांटेक्ट करना रहेगा, ठीक है, और जब आप एनरोल्ड करोगे then its processes should be started. जैसे मैंने बोला कि there is only a one layer of it जो हमने रिक्रूटमेंट में पढ़ा है, but there is more concept. This is only not the one thing because as we already know, Salma, you are experienced. You already know recruitment is not only the part of the HR. ठीक है, so we have many more. I can show you the name. You know, Student is building a whole HR thing. They wanted to do right, like very broad perspective. I don't want to tell you this, but I will. Wait a second. Okay. Sahil sir? Sahil sir? Recording stop कर दोगे क्या please? Recording stop. You're on mute. So my screen is visible to everyone. Yes, it is. Wow, Salma, you start also reading lip sync now. You can understand what I'm trying to say. Chalo, let's continue. Okay, this is the first week. Okay, introduction to recruitment वाला. जिसके अंदर हमने we have discovered कि what exactly recruitment is and what exactly talent acquisition is, right? So anybody wants to brief? Anybody wants to tell or share their point of views? Anyone? Anyone? Salma? Yes, so on the week one, we understood what is the difference between the recruitment and talent acquisition. And then we have looked like how recruitment differs from talent acquisition and what talent acquisition is a long run and recruitment is a short term process, depending on the situations and all. And also we have looked for the pipeline building and also we have looked at like if you remember, we all did this pre-requisition form for the job Right. filling. Yes, so we did, and we also understood what are the challenges in the recruitment as well as in talent acquisition. How to know the active and passive candidates, and then like any new technologies or what are the platforms we look for the recruitment and all. Yes, we have seen all this. Definitely. Totally agree with you, Salma. Apart from Salma, I think so. मेरे को ना हर section के बाद बोलना पड़ेगा. Apart from Salma, anybody want else to add some point? Okay, apart from Salma, somebody wants to lights on these points?
Anyone? Manisha, Rashika, Preeti, we are HR people. अब तो बोलो. I truly miss Rajesh and Yatad. Seriously, same here. Okay, so let's continue. So this is the thing is what exactly we have learned from the first week. Exactly recruitment क्या होता है, talent acquisition क्या होता है. तो जब भी हम talent acquisition की बात करेंगे, we talk about कि हम जो भी एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट देख रहे हैं, इट शुड हैव देयर रोल्स एंड पर्पसेस विद इट. वो कोई भी, अब देखो कोई भी हायरिंग होती है, ऐसे तो हम लोग लेबर लोग भी हायर करते हैं ना घर बनवाने के लिए, वो भी तो एक हायरिंग है. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिक्रूटमेंट. A company is hiring labor for their making their houses, but there is no talent. उनको work के लिए पे किया जा रहा है. That's called labor. But there is a difference between a labor and an employee, right? The difference is talent acquisition. The talent of skills of having that quality, right? तो एक कभी भी कोई भी हायरिंग होती है, when you include the talent thing, वो आपका लॉन्ग टर्म तक साथ देगा. अगर किसी स्किल्स कोई हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है, हम लोगों ने हायर कर लिया, ठीक है, उसके पास स्किल्स नहीं थी, फिर भी डू ऑफ कि मेरे को पोजीशन फिलिंग करना था, दैट्स व्हेन एचआर हायर अ पर्सन. बट समहाउ रीजन 3 महीने बाद प्रोविजन पीरियड के बाद पता चलता है दैट एम्प्लॉय इज नॉट केपेबल ऑफ टू डू दैट पोजीशन, तो डेफिनेटली लेफ्ट आउट करेगा. एंड जैसे ही वो ड्रॉप होगा, तो 3 महीने का एक तो उसका सैलरी भी वेस्ट हो गया, राइट? सैलरी भी वेस्ट होने के बावजूद उन्होंने कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई उस पोजीशन को लेके. Then the HR should be pointed out for that. So that's why when you do a hiring thing, always notice a talent acquisition part plays an important role. Whether you are hiring for a small position, whether you're hiring for the higher positions. Okay? So this is the key difference. After that, we talk about कि why it is important और क्या क्या challenges आपको मिलते हैं when you are hiring it. Definitely skill shortage is the main point. कि skill shortage है, सबको वो लिमिटेशंस नहीं आती. आजकल की इतनी सारी ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हो चुके हैं थ्रू एआई कि लोग नहीं, उनके पास नहीं है. आज मैं स्टिल आई फील मेनी पीपल डजंट नो हाउ टू यूज चैट जीपीटी एज वेल. But it's so easy to use that some of people doesn't know about it. Some doesn't know about what exactly AI working for them, right? Many people also see कि we can also make presentations with AI with chat GPT also, but many people don't know how to prepare those. तो वो चीज है, स्किल शॉर्टेज इज ऑल्सो देयर. तो दिस इज द फर्स्ट वीक टॉपिक वी हैव कवर्ड जो अनीता मैम ने प्रेजेंटेशन दी थी, और इन सबकी प्रेजेंटेशन ग्रुप पे है. ठीक है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स के साथ सेट किया हुआ होगा. ओके, सो द सेकेंड वीक द रिक्रूटमेंट साइकिल, जब हम स्टार्टिंग में आई थी, दिस वॉज माई फर्स्ट क्लास आई हैव टेकन विद यू. So we have discussed, right, what exactly recruitment cycle is, how it plays a major role. और सबसे बड़ी बात, I always say only one thing, कि हर चीज का फॉर्मेशन होता है, हर चीज का सेट ऑफ फॉर्मेट होता है. You can't use counting like 2 2 3 4 9, नहीं, 6. So every have a single step by step breakdown. ठीक है, उसके अंदर we have also discovered what exactly job requisition is. Apart from that, हम लोगों ने उस क्लास में जेडी के बारे में भी पढ़ा था कि why जेडी is important, right? We also do a job analysis, जिसके अंदर हमने जॉब एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा था, और जो आप लोगों को एक्सटेंशंस भी बताई थी कि इस एक्सटेंशंस को यूज करोगे तो यू कैन यूज योर जॉब एनालिटिक्स एटीएस वाला. डू यू गाइस रिमेंबर? यस और नो? Yes, सब ma'am. याद रिकॉल हो पा रहा है, Yes. राइट? व्हाट अबाउट अदर्स? प्रतीक, मनीषा, सोनम, यपन, Yes, ma'am. do you guys try to Um, recall like what we have yes, discussed ma'am. before? Okay, so this was the thing it हमने रिक्रूटमेंट साइकिल पढ़ा था. ठीक है, उसके अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द रिक्रूटमेंट पार्ट कि हम कैसे इंटरव्यू करेंगे, किस टाइप ऑफ इंटरव्यूज हम लोग लेते हैं, जेडी किस तरीके से प्रिपेयर कराई जाती है, व्हाट एग्जैक्टली. ओके, आई आस्क वन बाय वन व्हाट एग्जैक्टली जेडी इज. व्हाट आर द 5 पॉइंट्स यू विल फील कि जेडी में होना जरूरी है, वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद विष्णुजीत दे. नो एक्टिव. प्रशांत sir, if somebody is not saying yes or no, na, you have to be on C or that. Vishnujit दे. Okay, चलो नहीं है, नहीं है. अटेंडेंस के लिए है सिर्फ.
What about Priyanshi? तो गाइस, आर यू स्लीपिंग इन द क्लास? और लास्ट सेशन है तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे ही। Yes, ma'am. या प्रियांशी इज Okay. एक्टिव, चलो। हाँ कोई तो एक्टिव मिला। हाँ, तो प्रियांशी, व्हाट आर द पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट? कोई भी एक पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू आप इम्पोर्टेंट है जेडी में, while preparing a JD, और आपको लगता है वो जेडी में होना जरूरी है? Ma'am, company overview and location, qualifications, role and responsibilities. ओके, while preparing the JD आप ये सिर्फ मेंशन करोगे कि ये चीज सेक्शंस होने चाहिए, सेक्शंस के अलावा आपको फर्स्ट क्या कंसिडर करना चाहिए? व्हाट यू विल कंसिडर कि while? जेडी शॉर्ट हो एंड सिंपल हो, इजीली जो भी एम्प्लॉय है वो समझ पाए, जो भी क्लियर देख रहा है एंड जेडी वो इजीली समझ पाए। राइट, उसका फॉर्मेशन क्लियर हो, अब परफेक्ट फॉर्मेट में वो फॉलो अप हो, राइट? जैसे आप हर चीज यस। करते हो, एड्रेस, आप ये हमेशा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ जेडी ऑलवेज सी कि आपको वो रीडेबल है कि नहीं। फर्स्ट यू विल, ये नहीं कि कट कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया, इट्स नॉट शुड बी लाइक दैट। You should read one and one topic that yes, if you are an employee, are you able to get that position the HR is hiring for? Okay, so we also discussed कि हमें क्या क्या जेडी में important होता है, already we have discussed. Okay, I'll move forward. This in the third week we see forecasting. It's a very short topic but it is important to have a meaning of it. Anybody can tell me? I know Salma is just like okay मेरे को पता है ये सब, ठीक है? Okay, that's why the reason I'm not asking. Okay, what about others? Let's ask others. उनको last time पे पूछते हैं, कुछ तो पता ही होगा. What exactly forecasting is according to you, Prateek? What is forecasting? Sonam, Preeti, Ma'am, Ma'am. Yes. like the requirement is based on skill gaps, business goals, and also a demand. अच्छा ठीक है, just give me a simple meaning of forecasting. Forecasting क्या होता है exactly? Ma'am, future perspective Yes. Okay. Future perspective. Future perspective. और थोड़ा ब्रीफ करो इसको. for the organization goal. Okay. So forecasting is basically just a simple word कि आप फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए अपनी कंपनीज की गोल्स, मिशंस, टारगेट्स को देखते हुए व्हेन यू डू अ हायरिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी ने नेक्स्ट ईयर प्लान किया है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करने वाले हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो यू गेट टू नो कि हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च की कंपनी है तो मेरे को शायद सेल्स एग्जीक्यूटिव की नीड पड़ेगी. तो यू ऑब्वियसली फोरकास्ट दोस थिंग्स, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ. तो आप क्या कर सकते हो इसमें? अ पाइपलाइन, एक पाइपलाइन बिल्ड करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ओके, ठीक है. Are you able to understand what exactly forecasting is? Yes or no first. Forecasting is Yes, sir. basically nothing. जब आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव किसी को देखते हुए. कि, किसी को केस स्टडी याद है, जो केस स्टडी हमने दिया था करने के लिए? अमेजोन, Nokia था sir. फ्लिपकार्ट, अमेजोन फ्लिपकार्ट, साथ में बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इसी पे था आइडेंटिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग ऑफ हायरिंग नीड्स। और जस्ट ग्लैड टू शेयर हियर कि सिर्फ दो लोगों ने वो असाइनमेंट किया था, सलमा एंड यथार्थ। Yes. So this the thing is, as Prashant sir said कि हम लोगों ने केस स्टडी भी किया था उस चीज में. I know many of you don't remember, but totally fine. Because whoever wants to learn from these classes, they are too active. They already know they have given their assignments on time as well. So we will only focus on those. Okay. So forecasting is just a simple thing. हम जब future goals को लेके, future targets को लेकर, then we do a hiring part or when we create a pipeline. Okay. That's what exactly how we call a forecasting. Okay. So when we come to the second week, we see about effective sourcing strategies कि how we will use these strategies. Employer branding के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था
जिसमें we have also learned how to use Indeed, how to use LinkedIn. We also done the practical session, guys, if you remember, कि कैसे आप ये सब चीजें यूज करके यू कैन डू योर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज नथिंग, जब आप अपनी मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करते हो कि आपके यहाँ से एम्प्लॉयज अच्छे निकल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ किसी की कंपनीज में आप जाते हो, गूगल से पास आउट है, एवरीबडी वांट्स टू, वी हैव टेकन द एग्जांपल, राइट, एवरीबडी वांट्स टू वर्क इनटू एमएनसी, राइट, सबको अपनी सीवी में बिग एमएनसी के नाम चाहिए. तो दिस इज व्हाट, वहां पे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होती है. पीपल जज यू फ्रॉम देयर. So employer branding where comes to a role in. Okay. So we also discussed about the job portals. हम लोगों ने देखे थे Indeed, LinkedIn वगैरह के बारे में सब देखा था. ठीक है. After is there building a talent pipeline. We already know what is talent pipeline is. I can ask one by one also, or few if somebody wants to answer. What is talent pipeline? Manisha, Prateek, Sonam, Rashika, Vishnujit. Ma'am, talent is all about we जिन लोगों को हम लोग मतलब फ्यूचर के लिए जिनका इंटरव्यू हम लोग जैसे कि 10 इंटरव्यूज लेते हैं, हम लोग उसमें से 5 चूज करते हैं, तो जो बाकी के 5 होते हैं उनको हम लोग फ्यूचर के लिए रख लेते हैं. इट्स ऑल ठीक, अबाउट टैलेंट पाइपलाइन. राइट, यू कैन से, हाँ ठीक है, बट एग्जैक्टली आपको समझ मतलब आ गया, मेरे को ये पता है. वेरी गुड, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड दो, राइट, दैट्स व्हाट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज. सो आई कैन ब्रीफ यू इट. जब आप कोई भी फ्यूचर की हायरिंग नीड्स के लिए आप कोई भी बिल्डअप कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉयज का डेटा, दैट इज कॉल्ड अ टैलेंट पाइपलाइन इज. फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया बट आपके पास सिर्फ 2 की पोजिशन खाली थी, बट स्टिल यू फील कि ये जो 4 एम्प्लॉयज थे दे वर वेरी गुड एट इट. So you save their number, you save their references for the future perspective. कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी for the emergency, you can directly contact to them and directly hire them. So this is what the talent pipeline comes into a role. Okay, understood everyone? Yes or no? Okay. So this is what the thing is. We have discussed in it exactly how talent pipeline is important for us and what can you do to do that. Like आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमने, आपको याद है, सीआरएम भी देखा था, राइट. डू यू गाइस रिमेम्बर? ओडो देखा था हम लोगों ने, वर्कडे देखा था, 24/7 बीट्रिक्स. आई हैव सेड कि आप लोग जाके ब्रीफ करो कि कैसे वो सीआरएम यूज होता है. तो दिस इज ऑल्सो हाउ आप कैसे मेंटेन करके चलते हो टैलेंट पाइपलाइन में. ओके. अपार्ट थर्ड वीक में हमने वही देखा था आप कैसे मैनेज करते हो. ठीक है. ईवीपी, एनीबडी रिमेम्बर व्हाट इज ईवीपी? फॉरगॉट? Like the benefits we give for the work or the efforts they give back to Right. them. In terms of it can be compensation, right? It can be an incentive part, it can be a variable, it can be a fixed, it can be a gift, it can be a bonus. This is all come in is employer value proposition. And इस क्लास में हमारा यही हुआ था कि everybody was very shocked to get this meaning out, because everybody was thought it's such a fancy word, but nobody knows the meaning of it. But it's what very easy, right? So EVP हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द थर्ड वीक कि हाउ यू कैन डू एम्प्लॉय ब्रांडिंग. आप अपनी एम्प्लॉय ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करते हो. तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अगर आप कभी अपनी एम्प्लॉयर्स को अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हो, आप उनको प्रॉपर एंगेजमेंट उनके साथ कर रहे हो, ठीक है, उनको एक वेरिएबल दिया जा रहा है, उनको एज एप्रिसिएशन यू आल्सो प्रोवाइड देम बोनसेस. तो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर एम्प्लॉय ब्रांडिंग. ओके. किसको गिफ्ट लेना पसंद नहीं है, किसको अप्रिसिएशन पसंद नहीं है? एवरीबडी लव्स टू अप्रिशिएट, राइट, व्हाट दे वर डूइंग. यस और नो? Even at a house also, right, if we are doing a household works, if somebody appreciate like, yeah, आज खाना अच्छा बना था, तो we also get happy, अरे वाह. ठीक है ना? So this is how employer branding comes into a role when you are hiring for a company. और अब अगर आप किसी को अच्छे से ट्रीट करते हो, अच्छे से उनके साथ एंगेजमेंट रहते हो, तो जब भी वो आपकी कंपनी छोड़ के जाते हैं तो दे गिव यू अ पॉजिटिव फीडबैक. नो, दैट कंपनी वाज वेरी गुड, that company's HR is very good, they are very good with their employees, they have a good culture and environment. So this is how an employee value proposition is built. Okay, all clear? Yes or no till now?
Salma, I know that. All clear. What about others? Vishnujeet, Ayappan, Sonam, Manisha, Yes, ma'am. Prateek, Preeti? Yes. Yes, ma'am. Okay. So we came to the third class. Okay. This is all the thing we have covered in our second week. When I come to third week, this is the screening and the assessment part, in which we have discussed how will you guys take the interviews, right? How will you take the interviews and what are the questions you have to take? Do you guys remember? I also shared one of the word like word file also with that. कि आप क्या क्या क्वेश्चंस उसमें फॉर्मेट करते हो एंड व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस यू हैव टू स्टार्ट ऑफ. इसके अलावा हम लोगों ने स्क्रीनिंग के अंदर प्रैक्टिकल भी किया था वेयर यू ऑल्सो गाइस हैव टेकन योर इंटरव्यूज एज वेल और यू हैव ऑल्सो टेकन अदर इंटरव्यूज ऑल्सो. ठीक है. उसमें हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी किया था प्लस हमने प्रैक्टिकल भी किया था वेर यू गेट टू नो कि हाउ वी विल टेक द इंटरव्यू. ओके. दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि और कौन से हो सकते हैं. पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं. ठीक है. दिस इज द क्लास अनीता मैम हैज टेकन. ठीक है. उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू टेक्निक्स. ठीक है. उसके अंदर हमने पूछा था कि स्ट्रक्चर टेक्निक्स होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो रहा है, कॉलिंग पे होता है, टेलीफोनिक होता है, विजुअल होता है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज विल बी देयर. और जब हमने सीखा था कि जब आप कॉलिंग पे कोई भी इंटरव्यू ले रहे हो इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी, इट शुड बी वेरी क्रिस्प. सो आपका हर चीज का अलग स्ट्रक्चर होता है. if you are taking on phone call, if you taken on visual, if you are taking on face-to-face interview, your question should be different, right? According to the convenience. Okay. जिसमें हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि टेक्निकल राउंड भी होता है. टेक्निकल के अलावा सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स होती हैं उनसे पूछने के लिए व्हाट दे आर गुड ऑफ. ओके. यस और नो, यस और नो. Yes, ma'am. Yes. Okay. So the third session will be assessment methods. ठीक है. आपने हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था कि क्या क्या असेसमेंट यूज होते हैं. हमने बेसिकली इस पे इतना फोकस नहीं किया था बिकॉज असेसमेंट टेस्ट तो बेसिकली वो कंपनी बेसिकली या तो उनके पास खुद के टेस्ट होते हैं वो कराते हैं. नहीं तो आपने कुछ कुछ नोटिस किया होगा व्हेन किसी भी आईटी की हायरिंग हो रही है तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेते हैं आजकल कंपनी. They take aptitude tests as well. Okay, they want to check how good you are into aptitude skills. But these are only for the software part of companies. जो IT companies, IT positions के लिए आप लोग हायर करते हो ना तो उसके लिए ज्यादातर aptitude टेस्ट होते हैं. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट कि असेसमेंट मेथड भी यूज करे जाते हैं एज ऑफ टेकिंग एन इंटरव्यू. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ वीक, सिलेक्शन एंड ऑन बोर्डिंग. ठीक है. जिसके अंदर हमने देखा था हाउ विल यू मेक अ डिसीजन एंड ऑफर मैनेजमेंट. ऑफर मैनेजमेंट में वी हैव डिस्कस अबाउट कि हाउ विल यू गाइस ऑफर और नेगोशिएट विद द एम्प्लॉय, राइट? अगर आपकी कंपनी का बजट इतना है तो आप किस तरीके से उनको टारगेट करोगे एंड किस वजह से हाउ विल यू टेक द डिसीजन कि आप इक्वली क्वालिफाइड कैंडिडेट को सेलेक्ट करोगे. ओके. This is the thing we have taken onboarding best practices. ठीक है. onboarding में we have taken how will you take the orientation program, जिसमें training, mentorship. This is the PPT already shared you in the group as well, onboarding वाली. तो जिसके बारे में हमने देखा था कि आपको स्मूथ इंटीग्रेशन कराना है तो क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो. उनसे कम्युनिकेट करते हो, उनको सारे डिपार्टमेंट से मिलवाते हो जितनी भी कंपनीज उनको प्रोवाइड करें. इसके अलावा डू यू गाइस नो द बडी वाला पार्ट, right? Do you guys Yes. remember? Right. So buddy, a proper we also assigned a buddy to them in which जो भी उनके सेम प्रोफाइल में उनका कोई सीनियर है उनके अंडर वो बैठते हैं और दे कैन हेल्प यू आउट विद दैट. तो उससे उनको काम भी जल्दी समझ आता है. दे इवन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट कल्चर इट हैज टू बी फॉलो. ओके. So this is we have discussed in this. Enhancing the new hire experience. This is what we discussed कि हमें first starting few months पे उनको focus करना पड़ता है because they are totally new in the company. 3 months का किसी की कंपनी में 3 months का प्रोविजन होता है, किसी कंपनी में 6 months का प्रोविजन होता है. प्रोविजन पीरियड इज फॉर द टेस्टिंग पार्ट because if you are hiring for a fresher and you still feel but in the provision part आपके पास some rules and regulations होते हैं for the employee कि they can't take leave. If they take leave then it will be counted in LWP. उनका पैसे डिडक्ट होंगे अगर वो लोग छुट्टी लेंगे तो. If they are not on time, so this is the provision period in which
कंपनी गेट टू नो कि एम्प्लॉय सुटेबल है कि नहीं है फ्यूचर गोल्स को लेके कंपनी के लिए। तो उस प्रोविजन पीरियड में आपको बहुत ध्यान से उनको ऊपर ध्यान रखना है, उनके साथ एंगेजमेंट करना है, उनके वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है कि एग्जैक्टली जिस पोजीशन के लिए वो लोग हायर हुए हैं एग्जैक्टली दे आर डूइंग दैट वर्क और नॉट। ओके, तो दिस इज व्हाट द प्रोविजन पीरियड कम्स इनटू। तो आप कोई भी नया हायरिंग कर रहे हो, इन द स्टार्टिंग ऑफ द पार्ट यू हैव टू बी। So let's come to the fifth week. Fifth week we have discussed about the recruitment technologies, right? ATS के बारे में हम लोग मैम ने आपको बताया था exactly how application tracking system comes into. We have also done in the starting of the session the practical session of ATS. Okay, exactly how ATS works. I know Salma already know ATS, but I really want to know others what exactly ATS is. Iyappan, do you know what is ATS? Awesome. Hmm. Actually, it select the resumes based on the job descriptions and roles and responsibilities. Could you please speak loudly because I don't think so. Your voice is very echo. 1 second. Actually, it select the resumes automatically based on the job descriptions and roles responsibilities. Yes, this is the exact thing is, if I more exaggerate, the thing is ATS is a software or you can see a extension जो आपको help करता है finding the right candidate for you. So for example, we have taken same example कि अगर आपके पास thousands या 2000s of resumes आ जाएंगे, तो it's not possible as a HR you will read one by one whole resumes. तो आप क्या करोगे? What exactly you will do in the ATS part? You will prepare a JD. आफ्टर अपलोडिंग द जेडी, आप जो जो कीवर्ड आपने यूज करे हैं उस जेडी में, जिस जिस रिज्यूमे में 2000 रिज्यूमे है, जो जो रिज्यूमे है वो सुटेबल है, वो आपको नोट डाउन करके दे देगा, आपको निकाल के दे देगा। तो आपको सिर्फ फाइनल कॉल वहां पे करनी है। तो हमने इसका प्रैक्टिकल सेशन भी करा है, राइट? So this is this last topic. We have discussed it yesterday also. What exactly time to hire, cost per hire. These are the formulas we have discussed yesterday. How KPIs are important for us. Key performance indicators. ठीक है? Anybody wants to put a light apart from Salma? KPI क्या होता है? What exactly KPI is? Rashika, Priyanshi, Manisha was not there in the class. Prateek, Iyappan, Yes, ma'am. what exactly KPI is? Yeah, actually, Do you forgot? no. Okay, no. Then please elaborate us. We really want to understand what exactly KPI means through Yapan. Chalo, let's not waste our time. Uh, Yapan, you were saying something? no. Actually, Okay. Yeah. Please oh, try. okay. No, try. you can continue. You can continue. No. No, I'm just asking you that only. If you want to put a light on what exactly KPI is, please you can. Actually, it analyzes the performance of the employee like this. Performance, measure the performance. Okay. Basically a performance. Because you know the word performance, that's why the thing is. No. Chalo, it's okay, no problem. So what exactly KPI is? I really want Salma, you want to highlight? So KPI helps us in doing the recruitment, which means that aligns with the business goals. Like we take the measures or the steps as per the formulas we have told. We see whether it is aligned or whether it is not aligned. So that's how it is. Chalo, nice try. Not exact, but nice try. ठीक है, KPI is nothing. When it's a formula, मैम KPI calculate. बिजनेस Yeah. मेजर करता Sorry, मैम sorry, Rashika. मैम KPI is a metric which measure the business progress. Totally agree with you, Rashika. Straight to the point. Totally agree with you. KPI is simple metrics or formulas when you use to measure the performance of the organization employees. Okay, when you set for the budget.
ठीक है, उसके अंदर कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक टाइम टू हायर, कॉस्ट पर हायर, क्वालिटी पर हायर, ऑफर मैनेजमेंट, राइट। these आर द फॉर्मूलाज जो हमने कल डिस्कस किए थे कि अगर आपको कोई भी ब्रीफ चाहिए या कोई भी आप सोच रहे हो कहीं डिले हो रहा है, हमें कॉस्टिंग कम करनी है, तो यू यूज दीज केपीआई। ठीक है, थ्रू केपीआई से आप जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, राइट, डू यू गाइस रिमेम्बर बॉटलनेक्स, right? We have discussed the word bottlenecks, the obstacles while finding a correct candidate. तो आप उन bottlenecks को resolve करने के लिए you use these kind of metrics, KPIs. Okay. So this was it. We have covered so far for this month, right? This is all the topics we have discussed. So apart from that, we also done the practical sessions on it. Okay. Do you have still, guys, any kind of doubt you want to ask or you want to say something? No? No, no, no. Okay. So what we can do is I just wind up this class. Apart from that, this is all from it. आपके पास already active participation है PPTs का, ठीक है? This is the whole time. You can download it and save it for your future references if you want to take it, है ना? आप बाकी you can also go through the recordings. It's totally live for everyone. If they want to see the recordings, you want to recall those syllabus, they can go through that. Apart from that, if anybody wants to, after this class we will try कि हम सबके we will, it will take time because there are many students कि सबके completion certificate बनाने के लिए, so we will get back to you. And apart from that, if anybody wants to enroll with us our internship program, so they can also contact us with that. ठीक है, जिसके अंदर हम होल 3 to 4 months की इंटर्नशिप कराएंगे, इन विच सिर्फ हमने रिक्रूटमेंट वाला पार्ट लिया है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड स्टार्टिंग इन द क्लास there are much more topics and much broader part of it. The recruitment is not only the source of HR. Okay, so thank you so much everyone to be such a wonderful students with me. Okay, I know some of the students are not active, but really thankful for you guys to be always be there on time with me and taking me for 1 hour hold. Okay, thank you so much for giving me your precious time, and I'm really grateful that if I share my knowledge with you. And same as Anita ma'am, same as Prashant sir. So anybody wants to say feedbacks? I know I was taking the feedback yesterday also, but it will love to appreciate you, you know. Okay, I love appreciation. Okay, so you can start if you wants to give this feedback. So no one? Okay, I'll go ahead then. Okay, so it was like more than listening to a class. It was like more interactive session. It's not like only you are saying something or like some AI is speaking. It's not like that. It was like interactive, and Prashant sir, he always comes in between to make us awake from the sleep. So his sessions were also good. He was making us going through the ATS, the platforms, how they were working, and the assignments. The assignments were like real time. It's not like this like you give us one essay and we sit and write 100 times. It was not like that. It was like some real time projects which we worked on. Last time you have given us onboarding, you choose any company. I did it. I'm not sure, I didn't submit, but yeah, I still have, I did it. So it was like in this process I was learning the new technologies and how the current scenarios and the onboarding trends are. It's not the same, but I'm learning things. And yes, it was yeah, I couldn't say in Anita ma'am's class, but yeah, her classes were also amazing, that she was so calm and soothed. And yeah, I learned a lot from here. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you. It means a lot, you know, it means a lot. Anybody wants else who wants to convey their feedbacks for us? इनको नाम बोल के बोला Yes, ma'am. yes, yes, yeah, please. Actually, I'm new to this field. Actually, in this internship only I have heard about the ATS. This is the first time I am hearing the word ATS. Actually, I have now good knowledge about the ATS. Okay, this was it. Okay, that's good. If you know about that, at least we have given some knowledge to you. Because this is what the main perspective is for. कि आप कोई भी field से हो, it's our main motive. You should know anything. You should go gain